गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम मैथ्स का एक टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज मेंसुरेशन। और मेंसुरेशन के अंदर भी आज हम पहला जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं दैट इज पिरामिड्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पिरामिड्स होते क्या हैं। तो अ पिरामिड इज अ सॉलिड विद अ पॉलीगॉन बेस, पॉलीगॉन शेप्ड बेस एंड द रिमेनिंग ट्रायंगुलर फेसेस, लेटरल फेसेस मीटिंग एट अ वर्टेक्स। तो ये एक ऐसी चीज होती है जिसका जो बॉटम है ये बेटे पॉलीगॉन शेप होगा, यानी एक से ज्यादा साइड्स वाला इसका कोई शेप होगा, एंड ऊपर ट्रायंगुलर फेसेस होंगे। ये देखें, चाहे ये होगा, और इस पे भी एक चीज ये याद रखिएगा, आगे जाके आपको ये भी बताया जाएगा कि जिस शक्ल की बेस होती है उसका नाम लेके फिर आपको बाकी बोलना होता है। जैसे ये देखें, ये नीचे ट्राइंगल है तो इसको आप बोलेंगे ट्रायंगुलर बेस्ड पिरामिड। ये देखें नीचे ये स्क्वायर है तो स्क्वायर बेस्ड पिरामिड। ये देखें ये नीचे रेक्टेंगल बना हुआ है तो रेक्टेंगुलर बेस पिरामिड। यहाँ पे हेक्सागोन बना हुआ है, हेक्सागोन कहते हैं 6 फेसेस वाली कोई सी शक्ल को, तो इसको बोल के हेक्सागोन बेस पिरामिड। ओके बेटे, इससे आगे कुछ चीजें जो आपके लिए जरूरी हैं तो जरा उसको भी ध्यान से देखिएगा कि इन अ राइट पिरामिड द वर्टेक्स इज डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द बेस। कि अगर तो जो सेंटर ऑफ बेस है, ये जो नीचे बेस होगी, अगर तो ऊपर वर्टेक्स इसके बिल्कुल ऊपर होगा, यानी एट राइट एंगल ऊपर होगा, दिस विल बी कॉल्ड राइट पिरामिड। अदरवाइज इट इज कॉल्ड ऑब्लीक पिरामिड। जैसे ये देखें, इसका वर्टेक्स साइड पे इस तरह से है, वो बिल्कुल उसके ऊपर नहीं है, दैट्स व्हाई इसको हम बोलेंगे ऑब्लीक पिरामिड। इन अ पिरामिड द परपेंडिकुलर हाइट or the height is the perpendicular distance from the vertex to the base of the pyramid। तो ये याद रखिएगा बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट ये सब चीजें चलने लगी हैं, क्योंकि इसके बाद आपने इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं कि परपेंडिकुलर हाइट, या उसको सिर्फ हाइट भी बोला जाता है, और ये होती क्या है, दैट इज एक्चुअली द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स टू द बेस। यानी ये चीज जो होती है दिस इज कॉल्ड हाइट। ये आपको हमेशा ज़हन में रखनी पड़ेगी, क्योंकि आगे ये क्वेश्चंस में अप्लाई होनी है। द स्लांट हाइट इज द हाइट ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगुलर फेसेस। जबकि स्लांट हाइट ये जो साइड पे ट्रायंगल होगी, तो वर्टेक्स से लेके ये ट्रायंगुलर की बेस तक का जो इस तरह का डिस्टेंस होगा, दैट विल बी कॉल्ड स्लांट हाइट। द स्लांट एज इज द एज वेयर द ट्रायंगुलर फेसेस मीट ईच अदर। एंड ये जो है ये स्लांट एज कहलाएगा, जहां पे वो बिल्कुल कॉर्नर आ जाता है ना दो ट्रायंगल्स का, जैसे ये ट्रायंगल और इस साइड पे जो ट्रायंगल है, तो ये बीच में जो कॉर्नर है, या ये जो ट्रायंगल है और उस साइड पे जो ट्रायंगल होगी, तो ये बीच में ये एज आ जाएगा, तो इसको कहेंगे स्लांट एज। ओके बेटे, इससे आगे आप चीज पढ़ने लगे हैं कि वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस पे ये अप्लाई होना है। द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज 1/3 मल्टीप्लाइड बाय बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट। यानी आपने बेस एरिया निकाला करना है, वट एवर द बेस एरिया इज, उसको आपने हाइट से, हाइट अभी आपको बताया है कि परपेंडिकुलर हाइट होती है, and 1/3 से मल्टीप्लाई करना है। So the formula for the volume of the pyramid is 1/3 into base area into height। जबकि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पिरामिड का फॉर्मूला है टोटल एरिया ऑफ ऑल द फेसेस। यानी जितने भी फेसेस आपको नजर आ रहे हैं, ऊपर ट्रायंगुलर फेसेस आपको नजर आएंगे, और नीचे बॉटम में जो भी आपको नजर आएगा, चाहे वो ट्रायंगल हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, या कोई हेक्सागोन हो, वगैरह वगैरह। तो बेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द लेटरल फेसेस, यानी जो ऊपर फेसेस है उन सबको आपको प्लस करना पड़ेगा, तो दैट विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया। ओके बेटे, अब इसके हम जब कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो थिंग्स विल बी मोर क्लियर। जैसे क्वेश्चन इज द डायग्राम शोज अ पिरामिड विद अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर बेस ABCD। तो क्लियरली कह रहे हैं कि बेस इज अ रेक्टेंगल एंड उसकी डायमेंशंस आर गिवन, दैट इज 8 सेंटीमीटर बाय 5 सेंटीमीटर। Vn is the perpendicular to ABCD, और ये जो Vn है उसने क्लियरली कह दिया दिस इज परपेंडिकुलर, और उसकी हाइट भी उसने 12 दे दी है। गिवन दैट Vn is 12, इस साइड पे लिख भी दी है और फिगर में उसने शो भी कर दिया है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, और अब वो आपसे कह रहा है कि इसका वॉल्यूम निकाल दें। तो अभी आप ऊपर फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड इज 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। Now the base is a rectangle, ultimately the base area will be length into width हो जाएगा, जो कि यानी 8 into 5। तो ये देखें 1/3 बेस एरिया की जगह पे ब्रैकेट स्टार्ट 8 into 5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट आपने ये 12 लिखा हुआ है तो ये 12 आपने लिख दिया, एंड बाकी काम आपने अब कैलकुलेटर के ऊपर करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी 160, एंड यूनिट जो इन्वॉल्व हुआ है सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में होता है, तो दैट्स वाई आपको सेंटीमीटर क्यूब यूनिट लिखना पड़ेगा।
Here is another question, beta. Here is a figure, and the statement of the question is the diagram shows a tetrahedron VABC. This is a tetrahedron. So given that AB is 15, ये देखें AB 15 यहाँ पे given है, CD 10, ये देखें C से लेके D तक का डिस्टेंस ये 10 given है, and the volume of the tetrahedron is 225 meter cube. Find the height of the pyramid. तो इस हाइट ऑफ पिरामिड को आपने फाइंड करना है। अब देखिए ये पिरामिड है जिसका वॉल्यूम उसने हमें दे दिया हुआ, ये देखें वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट। तो ये देखें वी आर गोइंग टू पुट द फॉर्मूला, तो 1/3 इंटू बेस एरिया इंटू हाइट इज इक्वल टू वॉल्यूम होना चाहिए, जो कि वॉल्यूम ये देखें गिवन था, तो हमने उसकी जगह पे 2 to 5 इक्वल में लिख दिया। नाउ 1/3 विल रिमेन सेम इंटू बेस एरिया। अब जो इस पिरामिड के नीचे हमें ट्रायंगल नजर आ रही है, और ट्रायंगल का एरिया का आपको फॉर्मूला पता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। तो ये देखें ब्रैकेट स्टार्ट की 1/2 इंटू बेस, सो ये देखें ये ट्रायंगल की ये बेस है 15, एंड ये देखें सी से लेकर डी तक ये ट्रायंगल की हाइट है, तो ये 10 आपने यहाँ पे पुट कर दिया, ये देखें ये गिवन था। मल्टीप्लाइड बाय हाइट आपने लिखना है, तो ये देखें मल्टीप्लाइड बाय हाइट तो आपने फाइंड करना है पिरामिड का, तो ये वाला एज एज इट इज रहेगा इक्वल टू 2 to 5 विल रिमेन एज इट इज। अब यहां से देखें क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, ये तमाम वैल्यूज जो डिवाइड हो रही है, यानी 3 and 2 आपस में यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, राइट साइड पे जाके 2 to 5 से मल्टीप्लाई हो गया, और जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही थी यानी 15 and 10 उधर जाके डिवाइड हो गया, और एच यहीं पे रह गया। एंड अब आपने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर देना है, तो ये 9 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। Next question is the diagram shows a pyramid with a square base of side 10. अब ये देखिए क्लियरली वो कह रहा है स्क्वायर बेस है नीचे, एंड हमें उनकी डायमेंशन से भी पता चल रहा है कि if length is 10 width is 10 तो definitely this will be a square। तो ये स्क्वायर बेस्ड है आपके पास, एंड हाइट 12, ये देखिए उसने हाइट हमें 12 भी दी हुई है। नाउ द रिक्वायरमेंट इज फाइंड द स्लांट हाइट ऑफ द पिरामिड। हमने स्लांट हाइट फाइंड करनी है। अब ये देखें कि हम इसी फिगर को हमने दोबारा ड्रॉ किया, और यहां से हम ये स्लांट हाइट, ये वर्टेक्स से लेकर ये ट्रायंगल की बेस तक हम इस तरह स्लांट हाइट ये देखें ये आपने बना दी। ओके बेटे, अब ये देखें कि यहां से ये जो साइड इसने हमें दी हुई थी, यहां से हमने इस जगह से ये सेंटर तक लाइन खुद ड्रॉ कर दी। अब अगर आप नोट करें तो ये डेफिनेटली सेंटर था, यानी 10 का हाफ हो जाएगा बिकॉज टोटल लेंथ इज 10। तो यहां से अगर हम स्टार्ट करेंगे यानी हाफ से उस साइड पे जाएंगे तो डेफिनेटली वो 5 हो जाएगी। तो ये देखें ये 5 सेंटीमीटर बन जाएगी। नाउ दिस इज 12 एंड दिस इज 5 एंड दिस थिंग इज द रिक्वायरमेंट। इफ यू लुक एट द ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, एंड राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है कि बेटे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये देखें कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी वी बी तो आपने फाइंड करना है, दैट्स व्हाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो वैसे आ गया इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये देखें दिस इज द परपेंडिकुलर, तो ये 12 का स्क्वायर आ गया प्लस बेस स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर आ गया। अब यहां से ऑनवर्ड आप कैलकुलेटर पे जब सॉल्व करेंगे तो वी बी विल बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर जब आप इसको सॉल्व करेंगे। तो ये इसकी स्लांट हाइट आ गई। ओके बेटे, बी पार्ट इज ड्रॉ द नेट ऑफ द पिरामिड। नेट होता है कि कोई भी चीज बनती कैसे है, यानी उसको खोल के दिखा दो। अब ये देखें कि ये आपके पास एक पिरामिड है, अगर आप नोट करें तो अगर मैं इसके जो भी जॉइंट्स हैं इनको खोल दूं तो ये देखें ट्रायंगल इस तरह से आ जाएगी। ये देखें हम इसका अब नेट देखते हैं, ये देखें जी इस जगह पे ये इसका बी पार्ट सॉल्व है। ये देखें इस साइड से अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये इस साइड पे यूं ये ट्रायंगल आ जाएगी। ये देखें पीछे वाली ट्रायंगल उस साइड पे चली जाएगी, इस साइड वाली ट्रायंगल इधर आ जाएगी, और फ्रंट वाली ट्रायंगल इस तरह से आ जाएगी। ये देखें ये सेंटर में 10 10 10 होगा ये इस तरह से, और इस साइड पे ये जो अभी अभी आपने निकाला है 13, तो ये देखें 13 इस साइड पे भी होगा, 13 इधर भी होगा, 13 इधर भी होगा, 13 इधर भी होगा, क्योंकि ट्रायंगल तो एक जैसी है। सो दिस इज द नेट। इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया भी आपको बताया था कि एरिया ऑफ द बेस प्लस ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स आपने प्लस करनी होती है। अब एरिया ऑफ बेस क्या होगा, क्योंकि वो स्क्वायर बेस था, और स्क्वायर का हमें एरिया छोटी क्लासेस में हमने पढ़ा है एल स्क्वायर, यानी लेंथ को स्क्वायर कर दो। तो अब वो देखें साइड हमें जो बेस की गिवन थी दैट वाज 10, तो एल स्क्वायर यानी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 किया दैट इज 100। ये एरिया ऑफ स्क्वायर जो नीचे था उसका एरिया आ गया।
अब ऊपर देखें 4 ट्राइंगल्स थी, देयर वर 4 ट्राइंगल्स ऑन द टॉप एंड चारों एक जैसी थी, यानी अगर हम किसी एक ट्राइंगल का एरिया निकाल दें, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाली चारों ट्राइंगल कवर हो जाएंगी, नीचे बेस को उसमें प्लस कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। तो अब हम ट्राइंगल का एरिया निकालने लगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और फॉर्मूला होता है ट्राइंगल के एरिया का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल की बेस आपको याद होगी 10 थी और उसकी हाइट 13 अभी आपने निकाली थी, और जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो 65 आ जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ वन ट्राइंगल। लेकिन ऊपर कितनी ट्राइंगल्स थी? देयर वर 4 ट्राइंगल्स। दैट्स व्हाई आप 65 को, ये देखें 65 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये चारों ट्राइंगल्स आ गई, प्लस दिस इज द एरिया ऑफ द बेस। जब आप इन दोनों को एड अप करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को, तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द टोटल सरफेस एरिया। ओके बेटे, पिरामिड्स के कुछ क्वेश्चंस आने लगे हैं। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स, एंड इफ यू लुक एट दिस पिरामिड, इट्स बेस इज अ रेक्टेंगल एंड दिस इज रेक्टेंगुलर पिरामिड. So formula for the volume of the pyramid is 1/3 into base area into height. So this is the formula, and now we are going to put the values in this formula. 1/3 will remain as it is, and base is a rectangle whose dimensions are 10 and 8. So area of the rectangle is length into breadth, so that will be 10 into 8 will be the area of the base. And now height is the perpendicular height, and whose value is 12, so we will put 12 here. And now solve this on the calculator. For example, 3 4s are 12, 10 8s are 80, 84s are 320, and unit is centimeter, which is involving in the question. Volume is always in cubic units, so unit will be used centimeter cube. So this is the answer. This is a square pyramid, but in this question we are having slanting height but perpendicular height is missing. So first we will find the perpendicular height by drawing this perpendicular from vertex to the center of the base, and then join this point with the center of the base, and this is the height which is missing. And if you look at this value, this will be the half of 18, because this total is 18 and the center to this point will be 9. Okay, now we can apply Pythagoras theorem in this right angle triangle. So Pythagoras theorem is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse is given, that is 15. 15 square is 225. Perpendicular is missing, so this p square will remain as it is, plus base. Base is 9, so 9 square will be 81. And now p square will be equal to 225 minus 81. It will be equal to 144, and whose square root will be 12. So perpendicular is 12. And now we will find the volume of the pyramid. Formula of the pyramid is 1/3 into base area into height. 1/3 will remain as it is. Base area, base is a square whose values are 18/18, so base is 18/18, and height we have just find it, that is 12. So now we will use the calculator. 18 multiplied by 18 multiplied by 12 divided by 3. So answer is 1296. Meter cube will be the unit. So this is the answer. This is a triangular pyramid, and in this pyramid, first we will put the formula of the volume of the pyramid, that is 1/3 into base area into height.
1 by 3 will remain as it is. Base area is actually a triangle with base is 5 and height is 2.5. So the formula for the triangle is 1 by 2 into base into height, that is 2.5. So we have put the values for the area of the triangle in the bracket, and now the height of the pyramid, that is given 3.6 here. So 3.6 will be written here, and now we will use the calculator. 5 multiplied by 2.5 multiplied by 3.6 divided by 6. So we have answer 7.5. Unit will be centimeter cube. So beta, this is the answer. In this question, requirement is calculate the total surface area. So if you look carefully at the figure, this is a square pyramid. So total surface area will be base area plus 4 triangles will be equal to total surface area of the pyramid. So we are going to put the values. Surface area is base area plus 4 triangles. Now base area is 8 by 8 because it is a square, and 4 triangles are there. Triangles dimensions are base is 8 and height of the triangle is 10. So this 4 will remain as it is, and in triangle we are going to put the formula and the values of the triangle. Base of the triangle is 8 and 10 is the height of the triangle. So these are the values, and now we will use the calculator. 8 8s are 64, and this 2 2s are 4, and this 2 8s are 16, 16 10s are 160. And when we will add up these two values, it will become 224, and unit will be used centimeter square because area is always in square unit. In this question, beta, this is rectangular pyramid. Now you have to be careful because triangles are of 2 different categories. Front and back triangles will be same, and right and left triangles will be same, and there is a base as well. So surface area will be equal to base area plus 2 triangles on right and left are of same, and front and back will be of same. So we are going to put the values in the formula. Base is a rectangle, so length into width will be the formula for the rectangle. So 6 multiplied by 4 is the base area of the base, plus right and left triangles are same. There are 2 triangles of the same, and formula of the triangle is 1 by 2 into base into height. Base of the right side triangle will be 4 and height is 12, plus 2 triangles are there again on front and back. Like front triangles dimension, base is 6 and height is 11.8. And now we will use calculator. Six 4s are 24, plus this 2 will be cancelled by this. 12 4s are 48, plus this 2 will be cancelled by this, and 6 into 11.8 is equal to 70.8. And finally these 3 values will be added, which is equal to 142.8. Centimeter square will be the unit. This is a square pyramid, but in this figure we don't have the height of the triangle, that is slanting height, so that is missing. First we will find that value.
Perpendicular height of the pyramid is given, like in slanting height is missing. So first apply the Pythagoras theorem, that is hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Now the hypotenuse is missing, that will remain as it is. Perpendicular height is 6, so 6 square will be 36, and base, so this total is 4 and half of the value will be 2, so 2 square is 4. 36 plus 4 will be equal to 40, and 40 square root will be 6.32. So this is the slanting height. Now we will find the surface area. So surface area of the full figure is base area, that is 4 into 4 will be equal to 16. Okay, first we will put 4 into 4 plus all 4 triangles are of same, so 4 into 1 by 2 into base into height. Base of the triangle is 4 and height is 6.32. And now we will solve these values. 4 4s are 16 plus 2 2s are 4, 4 2s are 8 into, this will be equal to 50.6. And now these two values will be added up, it will be equal to 66.6. Unit will be millimeters square. The statement of this question is, the diagram shows a closed glass container in the shape of the pyramid. The height of the container is 15 centimeter. So height of the container here is 15 centimeter. It is filled with water to a depth of 8 centimeter. So if this is 8, so the length above the water will be 15 minus 8 equal to 7 centimeter. Given that the horizontal rectangular surface area of the water level is 46.2, so this water level area is 46.2 centimeter square. And requirement is find the volume of the pyramid not occupied by water. So if you look at the area, that is the requirement, is also a pyramid. So here is a base whose area is given, and perpendicular height of the remaining thing that is going to be required is 7 centimeter. So the volume of the pyramid is 1 by 3 into base area into perpendicular height. 1 by 3 will remain as it is. Base area of the required pyramid is given, that is 46.2. And perpendicular height, we have just finded it out, that is 7. And now use the calculator. 46.2 multiplied by 7 divided by 3. So answer is 107.8. And unit will be centimeter cube because volume is in cubic unit. The statement of this question is, pyramid VABCD has a square base of sides 16 centimeter and height is 15. Find the volume. So this is a square pyramid. Volume is equal to 1 by 3 into base area into perpendicular height. 1 by 3 will remain as it is. Base is a square whose the area of the square is L square. So 16 into 16 will be the area of the base, and height is perpendicular height of the pyramid is given, that is 15. So now we will
solve this thing on the calculator. 16 into 16 into 15 divided by 3. Answer is 1280. Centimeter cube will be the unit. Second requirement is, this was A part. Second requirement of the question is find the slanting height. Okay, bete, if you look at the figure carefully, perpendicular height of the triangle is given, but hypotenuse is like slanting height is missing. Perpendicular height is given, and the base of the triangle is also missing. But if this total length is 16, half of the length will be 8, so this will be 8 centimeter. So we are going to apply the Pythagoras theorem in this question. Hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square. Hypotenuse of the triangle is missing. Perpendicular is 15, so it will be 15 square plus base. Base is 8, so it will be 8 square. 15 square will be 225. 8 square is 64. So this will be solved now. 225 plus 64 equal to 289. And now take the square root of this one. This will be 17. So 17 centimeter is the hypotenuse. That will be the slanting height. Okay, now slanting height is solved. And the C part of the question is find the total surface area. Now total surface area will be equal to the area of the base, that will be L square, plus 4 identical triangles are on top of the square, because this is a square pyramid. So on the square, 4 triangles will be of identical. So there are 4 triangles, and triangle area formula is 1/2 into base into height. Now we are going to put the values in this formula. L square, that is base, so it will be 16 square plus 4, and 1/2 will remain as it is. Base of the triangle is 16, and height is, that is slanting height, that will be 17. And now solve it on the calculator. 16 square is 256, plus this will be 2 2s are 4. So 2 into 16 into 17. 2 into 16 into 17. That is equal to 544. And now these two values will be added up. Plus 256. It is equal to 800. Unit will be centimeter square. In question number 8, statement of the question is sketch the net of the following pyramids and label the dimensions. So bete, if you look at the base, that is a square base. First we will draw the square. You will draw it with the help of the scale, because I'm using a camera and I have to hold the paper carefully, so that's why I'm not using the scale. So first you have to draw the square, that is A B C D. A B C D, and the dimensions are 5 5 5 5. This is 5 centimeter. This is 5 centimeter, this is 5 centimeter, and here is 5 centimeter. And then this vertex will be opened up. So here will be V. Here is again V. Here is again V. And here is again V. And this slanting height is 4.6. So this will be 4.6 each. 4.6 centimeter, 4.6 centimeter, 4.6 centimeter, 4.6 centimeter, 4.6 centimeter,
4.6 centimeter, 4.6 centimeter, and 4.6 centimeter. So beta, this is the net of this figure. This is a rectangular pyramid because dimensions are 10 by 6 and the requirement is again to sketch the net. So first we will draw the rectangle that will be like this. And the rectangle is ABCD. Dimensions of the rectangle is 10 centimeter by 6 centimeter. And then vertex will be opened up. So here will be V. Here will be V. Here will be V. And here will be V. And now at this step you have to be careful because there are two different types of the triangles in the pyramid. Right and left triangles are same whose slanting height is 6. So here is 6 centimeter and here is 6 centimeter. This is V, this is V, this is V, and this is V. And front and back triangles are same whose slanting height is 10. So here is 10. And here is 10. So this is the net of this figure. In question number 9, requirement is sketch and name the solid formed for each of the following. Remember beta, you have to use the scale because I'm holding a lot of things like papers, camera, pen, everything. So that's why I'm not using the scale. So I'm drawing the figure by hand. Base is a rectangle. So first we have to draw a rectangle first. Here is a rectangle that is 8 centimeter by 6 centimeter. And on top there are definitely two different types of the triangles. First draw the figure. Okay, beta. Slanting height of the front and back triangle is 9. So front triangle's height is 9 centimeter. And right and left triangle's height is 9.4. This is 9.4 centimeter. Okay, beta. Now the second requirement is find the total surface area of the solid. So the surface area now will be equal to base area, that is a rectangle, that is length into width, and plus there are two different types of the triangles, 1/2 into base 1 into height 1 plus 1/2 into like 2 into 1/2 into base 2 into height 2. And now we are going to put the values in this formula. Length into width of the base is 8 into 6 plus this 2 will be cancelled by this. For example, B1, H1 represent the front and back triangles, and base of the front triangle is 8 and height is 9. Here is 9.
This 2 is cancelled by this. Here again this 2 will be cancelled by this, and this base and like B2 and H2 are the dimensions of the right and left triangles. So right triangles base is 6 and height is 9.4. Now use the calculator. 8 6 are 48, 9 8s are 72, and 6 multiplied by 9.4. 6 multiplied by 9.2. 6 multiplied by 9.4 equal to 56.4. And now these values will be added up. Answer is 176.4. Unit will be centimeter square. Statement of question number 15 is, the diagram shows a metal solid made up of a pyramid and a cuboid. So it is a cuboid and on the top is a pyramid. If the density of the metal used is 9.8 grams per centimeter cube, find the total mass of the solid. So first we have to find the volume of the full solid. That will be equal to volume of cuboid plus volume of pyramid. Now we are going to put the formulas. Volume of the cuboid formula is length into width into height. And volume of the pyramid is formula is 1/3 into base area into perpendicular height. Now put the values. Length, width and height are given of the cuboid, that is 6 into 10 into 12. And now for pyramid, 1/3 will remain as it is. Base area is a rectangle of the pyramid, that is 6 into 10. And perpendicular height of the pyramid will be like this. Total height is 21 and this height is 12. So pyramid's height will be 21 minus 12. That will be equal to 9 centimeter. And now put the value, like cancellation will be there, and solve it. And this will be 6 3s are 18 into 10, 180. And answer will be 900 centimeter cube. So this is the volume, but the requirement is find the total mass. So another formula will be used, that is density is equal to mass over volume. Now mass is the requirement, so this mass will remain as it is. Volume is find it out, that is 900, and density is given, that is 9.8. 900 will be multiplied by 9.8. And now solve it on the calculator. That will be equal to 900 multiplied by 9.8. That will be equal to 8820. And this is mass. So mass will be in grams. The statement of the question number 16 is, the metal solid is made up of the pyramid and prism. Find the volume of this solid. So bottom figure is a pyramid and the top figure is a prism. In total we have this length is 52, total figure's length, and this height is 16.
So pyramid's perpendicular height will be 52 minus 16, that will be equal to 36. Now we are going to find the volume of the prism. So volume of prism. Volume formula will be 1 by 3 into base area into height. 1 by 3 will remain as it is. Base area of the prism is a rectangle whose dimensions are 14 and 25. And perpendicular height of the prism is 36. So 14 into 25 into 36 divided by 3 will be equal to 4200 centimeter cube is the volume of the prism. Now volume of this is volume of pyramid. And now volume of prism. Formula is cross section area multiplied by length. Cross section area is a triangle whose dimensions are base of the triangle is 14 and height is 16. So cross section area is 1 by 2 into 14 into 16. This is cross section area and the length is 25. Now solve it on the calculator. 14 into 16 into 25 divided by 2. Answer is 2800. Now add up these two values, that will be equal to the total volume. That is equal to 7000. Total volume is equal to 7000. And the volume will be in centimeter cube because centimeter unit is given. Okay, beta, A part is done. Now B part is the density of the solid. So volume is given, density is missing, and mass is also given. So formula will be used, density is equal to mass over volume. Density is the requirement, this will remain as it is. Mass is given, that is 56 kg. Okay. And volume is 7000. So 56 over 7000. Answer is 0.008. Beta, this mass is given in kg and volume was in centimeter cube, so unit will be kg per centimeter cube. This is the answer.